जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त को दिव्यानी इंटरनेशनल का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन 7 टॉपिक्स। फर्स्ट, व्हाट इज द कंपनी प्रोफाइल। सेकंड, प्रमोटर्स। थर्ड, competitive strength. Fourth, objectives of the issue. Fifth, company financials. Sixth, IPO details. And seventh, I will give you my conclusion, what I think whether you should apply for the IPO or not. It is the largest operator of quick service restaurant, which is known as QSR. And दोस्तों, it operates 696 stores across 166 cities of India. दोस्तों, यम ब्रांड्स में आता है हमारा पहले तो KFC, जो कि चिकन के लिए बहुत फेमस है, चिकन लवर्स जानते ही होंगे। दूसरा आता है हमारा पिज्जा हट एंड थर्ड टैको बेल ब्रांड्स। सो ये हो गई यम ब्रांड्स की फेमस फ्रेंचाइजीज। दोस्तों, दिव्यानी इंटरनेशनल हैज 50,000 restaurants in 150 countries of the world. Company began relationship with Yum brands in the year of 1997. And after that, it opened its first store, which was a Pizza Hut store in Jaipur. It now operates 284 KFC stores and 317 Pizza Hut stores, having an extensive presence in 26 states and 3 union territories of India as of June 2021. Divyani International has a franchisee of Costa Coffee brands and it is currently operating 44 stores under the Costa Coffee. So दोस्तों, the company is divided into 3 verticals. First, KFC, second, Pizza Hut, third, Costa Coffee. Under its international business, it has stores in Nepal and Nigeria for KFC and Pizza Hut. In the food and beverage industries, it maintains stores like Wango and Food Street. दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि दिव्यानी इंटरनेशनल का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है. You can find it in every metro city, Delhi, Mumbai, Kolkata, anywhere, and even tier 2 cities also. Now let's discuss about the promoters of the company. They are Ravikant Jaipuria, Varun Jaipuria, and RJ Corporation. They collectively hold 75% of the company, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा नंबर. दोस्तों, रविकांत जयपुरिया is the chairman of the board of the company. He has over 3 decades of experience in expanding the business. Varun Jaipuria has an experience of 12 years in the business and he has completed a course in leadership development from Harvard Business School. अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर की, तो वैराग जोशी इज द ग्रुप सीईओ. दोस्तों, वैराग जोशी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपनी में. वो 2002 से एसोसिएटेड हैं कंपनी से और उन्होंने ही मेनली स्टोर्स का एक्सपेंशन किया है पिज्जा हट, केएफसी एंड कोस्टा कॉफी का. रजत लूथरा, ही इज द सीईओ ऑफ केएफसी बिजनेस. अमिताभ नेगी, ही इज द सीईओ ऑफ पिज्जा हट बिजनेस. सीएफओ इज Manish Davar and company secretary is Anil Dwivedi. Now let's discuss the strengths of the company. First, it has a portfolio of highly recognized global brands like KFC, Pizza Hut and Costa Coffee. It has a strong presence in India as well as internationally. It has a disciplined financial approach with respect to cash flows. इनका management बहुत ही experienced है and they know what to do to take the company ahead. It has got the largest franchisee of Yum brands in India. Now let's discuss about the objectives of the IPO issue. दोस्तों, जो funds generate होंगे through IPO, the company is looking forward to pay the borrowings of rupees 324 crores and the remaining money will be used for general corporate purpose. So now let's talk about the company financials. The revenue for the year 2019 was 1,323 crores. The revenue for calendar year 2020 was 1,535 crores. And for the year 2021, it was 1,198 crores, which was a dip. The most highlighting factor in the company financials is highest debt level. दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इनका डेट बहुत ही ज़्यादा है. इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 4 पॉइंट समथिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा है एंड विच इज़ अ रेड फ्लैग.
Now let's talk about the IPO details of Devyani International. The company is looking to raise funds of rupees 1,838 crores. The offer will open on subscription on August 4th and will close on August 6th. You can expect each share to be in the price range of 86 rupees to 90 rupees. One lot size contains a quantity of 165 shares. The minimum investment for the IPO can be 14,850 rupees and the maximum investment could be 1,93,050 rupees. दोस्तों 10% of the issue size is reserved for us, we retail investors. Now let's conclude whether if I was there, I will apply for the IPO or not. तो दोस्तों जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है विच इज़ 4 पॉइंट समथिंग एंड ये देखते हुए ये मेरे लिए थोड़ा टर्न ऑफ हो जाता है. मैं अगर पर्सनली देखूं तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स लेता, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको देखता, बट बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसके लिए नहीं जाना चाहूंगा. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं. जय हिंद.